श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 46 of the Ayodhya Kandam, which has 34 verses. Having reached the banks of the Tamsa and thinking of the plight of the people of Ayodhya, Sri Rama lays himself down on a bed of leaves, bewailing the lot of his parents and feeling reassured by the thought of Bharata's noble qualities. While Lakshmana opens his dialogue with Sumantra on the divine excellences of Sri Rama. Waking up in the meantime, Sri Rama urges the chariot minister to drive the chariot in such a way as to put the citizens that had accompanied them off the scent and lead them to think that the chariot has turned back towards Ayodhya instead of proceeding towards the forest. He then mounts the chariot along with Sita and Lakshmana and presses on into the forest. आज हम चतुवरिंश सर्गा का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। ततस्तु तमसा तीरं रम्यम् आश्रित्य राघवः सीताम् उद्वीक्ष्य सौमित्रम् इदं वचनम् अब्रवीत्। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। Then taking his stand on the delightful bank of the Tamasa and gazing on Sita, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, spoke to Lakshmana, son of Sumitra, as follows. इयम् अद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनं वनवासस्य भद्रं ते न च उत्कंठितम् अर्हसि। सुमित्रा नंदन तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे इस वनवास की आज ये पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब हमें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। Today, O Lakshmana, is the very first night of our exile in the forest. And since it is to the forest that we have been sent away, you ought not to feel anxious for those that have been left behind. May all be well with you. पश्य शून्यानि आरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा अनिल यमायाद्भिः निलीनानि मृग्द्विजैः। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। इनके शब्द से सारी वन स्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। Look here, sought for shelter by beasts and birds, retiring to their respective abode, the desolate woods are crying, as it were, on all sides. Ayodhya. अद्य अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स स्त्री पुंसा गतान् अस्मान् सोचिष्यति न संशयः। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेंगे, इसमें संशय नहीं। The city of Ayodhya, the capital of my father, King Dashratha, with its men and women, will for its part lament today for us three that have departed for the forest. There is no doubt about it. अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतौ तथा। पुरुष सिंह अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं।
For the people of Ayodhya are devoted to the king no less than to you and myself, and also to Bharata and Shatrughna for our manifold virtues, O tiger among men. पितरं च अनुशोचामि मातरं च यशस्विनीम् अपि नान्दौ भवेतां नौ रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। I bewail the lot of my father as well as my illustrious mother Kaushalya. I fear lest those parents of ours who must be incessantly weeping should be deprived of their eyesight. भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मार्थकामसहितैः वाक्यैः आश्वासयिष्यति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, अवश्य ही वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरे माता को भी सांत्वना देंगे। I am sure that the pious-minded Bharata will console my father and mother by means of words assuring them of religious merit, material welfare, and sense of gratification. भरतस्य अनृशंसस्त्वं संचिन्त्य अहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज। महाभाव, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। Reflecting again and again on the tender-heartedness of Bharata, O mighty armed prince, I do not lament for my father and mother. त्वया कार्यं नरव्याघ्र माम् अनुव्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेही कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। By following me to the forest, O tiger among men, a great purpose of mine has been served by you. For otherwise, aid would have been sought before by me for looking after Sita, the princess of the Vaidehi kingdom. अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्यामि अद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की ये रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। I shall certainly live on water alone tonight, O son of Sumitra. Although there are various kinds of wild fruits and roots, this alone pleases me. एवमुक्त्वा तु सौमित्रं सुमन्त्रम् अपि राघवः अप्रमत्तः त्वम् अश्वेषु भव सौम्ये इति उवाच ह। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान ना हो। Having told Lakshmana, son of Sumitra, as above, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, so the tradition goes, spoke to Sumantra too as follows. Attend you to the horses now, O good sir. सो अश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्यस्तं समुपागते प्रभूतय वसान् कृत्वा बभूव प्रति अनन्तरः। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। Fastening the horses tightly, the sun having completely set, and supplying them with abundant grass, the said Sumantra returned to the presence of Sri Rama. उपास्य तु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिम् उपागतां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। फिर वर्णाकुल कल्याणमयी संध्योपासन करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया।
Having worshipped the goddess presiding over the benign evening twilight according to his grade in society, and seeing the night fallen, the charioteer, along with Lakshmana, son of Sumitra, prepared a ground suitable for Sri Rama to sleep on by brushing aside the gravel and particles of dust, as well as a bed of leaves. तां शय्यां तमसा तीरे वीक्ष्य वृक्षदलैर्वृतां रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेश। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। Perceiving the aforesaid bed overspread by Sumantra with fresh leaves of trees on the banks of the Tamsa with the help of Lakshmana, son of Sumitra, Sri Rama with his consort lay down on it, so they say. सभार्यं संप्रसुप्तं तुश्रान्तं संप्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान्। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगा। Observing Sri Rama buried in deep sleep with his spouse fatigued as he was, Lakshmana for his part began to recount the various virtues of Sri Rama before the charioteer. जाग्रतोरेव तां रात्रिं सौमित्रि रुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतना ही नहीं, वह में सूर्य उदय का समय निकट आ पहुंचा। The sun rose past Lakshmana's son of Sumitra, even as he was recounting to the charioteer on the bank of the Tamsa the excellences of Sri Rama. Both Lakshmana and Sumantra keeping awake the whole of the night. गोकुलाकुलतीराया तमसाया विदूरतः अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वह प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। At a respectable distance from the Tamsa, whose bank was crowded with herds of cows, Sri Rama spent that night with the citizens on the aforesaid stretch of land. उत्थाय च महातेजाः प्रकृतिता निशाम्य च अब्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्ष्मणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। Getting up from the bed and seeing those people lying at some distance, Sri Rama, who was possessed of extraordinary splendor, spoke as follows to his younger brother Lakshmana, who was endowed with auspicious bodily marks. अस्मत् व्यपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण सांप्रतम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो। ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। वे अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। Behold, O Lakshmana, the citizens full of great longing for us and absolutely unmindful of their homes and also of their near and dear ones, lying close to the roots of the trees till this late hour, O son of Sumitra. यतैते नियमं पौराः कुर्वन्ति अस्मन् निवर्तने अपि प्राणान् न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि वे अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। From the way in which these citizens are taking pains to take us back to Ayodhya, it seems they will lay down their lives, but would in no case give up their resolve. यावदेव तु संसुप्ताः तावदेव वयं लघु रथम् आरुह्य गच्छामः पन्तानम् अकुतो भयम्।
अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अतो भूयोऽपि नेधानिम् इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुः अनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः। अयोध्या वासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। Therefore, while they are fast asleep, let us in the meantime quickly mount the chariot and take a route which has no fear of molestation from any quarter, so that the citizens of Ayodhya, the ancient capital of the Ikshvaku, who are so keenly devoted to me, may not henceforth have to repose leaning against the roots of trees as of now. पौरा हि आत्मकृतात् दुःखाद् विप्रमोच्या नृपात्मजैः न तु खलु आत्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः। राजकुमारों का ये कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। The residents of a city ruled over by a king should indeed be completely and finally rid by the sins of their rulers of suffering brought about by the citizens themselves. The citizens should on account be burdened with affliction caused by the princesses themselves, as is in our case. अब्रवीत् लक्ष्मणो रामं साक्षात् धर्ममिव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिपार्ह्यताम् इति। ये सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। Lakshman replied as follows to Sri Rama, who was firm as virtue incarnate. What you say appeals to me, O wise brother. Pray ascend to the chariot quickly. अथो रामो ब्रवीत् सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रं इतः प्रभो। तब श्री राम सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। Sri Ram then said to the charioteer, please get the chariot ready soon. On it I shall proceed to the forest. Depart from this place at once, O revered one. सूतः ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़े को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया. Having got the chariot ready with those excellent horses yoked to it with great expedition, the charioteer for his part thereupon submitted as follows with folded hands to Sri Rama. Ayam yukto mahabaho rataste ratinam vara tvaraya aroha badram te sa सीतः स लक्ष्मणः. महाभाव रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो. आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है. अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए. Here is your chariot ready, O mighty armed prince. Pray ascend it quickly with Sita and Lakshmana, O jewel among chariot warriors. May prosperity attend to you. तं चन्दनम् अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामा कुलावर्ता तमसाम् अतरन् नदीम्. श्री रामचंद्र जी की सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए. Mounting the aforesaid chariot with all necessities for traveling, which is his bow, armor, quiver, spade, basket, and so on, Sri Rama, a son of Raghu, speedily crossed thereby the swift-flowing Tamsa, thickly eddies. स संतीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवम् अकंटकम् प्रापद्यथ महामार्गम् अभयम् भयदर्शिनाम्. नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर
जा पहुंचे, जो कल्याणप्रद, कष्ट रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। Having duly crossed the stream, the glorious Sri Rama, who was possessed of mighty arms, reached a smooth road free from obstacles and safe even for those who were apprehensive of danger. मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामो अब्रवीत् वचः उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, सारथे हम लोग तो यही उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यही लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले, वैसा एकाग्रत पूर्वक प्रयत्न कीजिए। With a view to putting the citizens off his scent, Sri Rama for his part spoke to the charioteer as follows. Mounting the chariot alone, O charioteer, proceed you northwards, and going apace a while, bring the chariot back again. Remaining careful, drive the chariot in such a way that the citizens may not be able to locate me. रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। Hearing the command of Sri Rama, the said charioteer for his part did as he was told, and returning by a different route, reported to Sri Rama the arrival of the chariot. तौ संप्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा स सीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामास ततः तुरंगमान् स सारथिर्येन पथा तपोवनम्। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटाकर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। Then Sri Rama and Lakshmana, the promoters of the race of the Raghuvamsha, for their part, along with Sita, comfortably took their seats in the chariot, which was duly kept ready by the charioteer for their use. The said charioteer thereupon urged the horses along the route by which they could reach a forest suited for austerities. ततः समास्ताय रथं महारथः सा सारथिर् दाशरथिर्वनं ययौ उदङ्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणम् आंगल्य निमित्त दर्शनात्। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तर विमुख खड़ा किया, फिर वह उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। At the outset, however, the charioteer placed the chariot facing the north, for he saw omens auspicious for the journey in that quarter. Having duly occupied the chariot, Sri Rama, son of Dasharatha, who was a great cow warrior, thereupon proceeded to the forest along with the charioteer. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 46वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 46 in the Ayodhya Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam
भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।